हेलो ऑल। तो मैं अंजलि श्रीवास्तव, डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव, रिटायर्ड zoology प्रोफेसर विद माय यूट्यूब चैनल आदर्शालय अगेन बिफोर यू। आपके सामने मैं फिर से हूँ इन्वायरमेंटल साइंस या ईवीएस के सेकंड टॉपिक के साथ, डेफिनेशन, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ईवीएस, दैट इज एनवायरमेंटल साइंस। इस टॉपिक में, इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। इसके पहले हमने देखा एनवायरमेंट एक मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस है। ईवीएस एक्चुअली एनवायरमेंट नहीं, हम ईवीएस के को लेकर के ये सीरीज बना रहे हैं। एनवायरमेंटल साइंस का ये सीरीज है जो एक सब्जेक्ट है फॉर द सेकेंड सेमेस्टर ऑफ ग्रेजुएशन लेवल, जिस पे पूरा ये सीरीज बन रहा है, जिसका ये सेकेंड सीरीज है, सेकेंड चैप्टर है। सो दिस इज डेफिनेशन, स्कोप, इम्पोर्टेंस ऑफ ईवीएस। तो एनवायरमेंटल स्टडीज में एनवायरमेंट हम पढ़ेंगे, ये तो अंडरस्टूड है कि एनवायरमेंट डील्स विद द एनवायरमेंटल स्टडी, डील्स विद द एनवायरमेंट। एंड व्हाट इज एनवायरमेंट? जहां हम रह रहे हैं, दैट इज जो चीज भी है जो हमारे आसपास है। दिस एनवायरमेंट हैज बीन derived from a French word environ or environner, that is the everything in the surroundings, जो हमारे आसपास है, जो जिससे हम घिरे हुए हैं, दैट इज environ और environment। और जो साइंस इस एनवायरनमेंट को जानने में, एनवायरनमेंट के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, एनवायरनमेंट के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, एनवायरनमेंट के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो एनवायरनमेंट को सराउंड करके एलिमेंट्स हैं, उनके बारे में हम इस चैप्टर में, इस वीडियो में देखेंगे शॉर्ट में। और जो साइंस जिसे ह्यूमन मेड है, जो साइंस जिसे क्रिएट किया है हमने फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन, एंड दैट इज द एनवायरमेंटल साइंस। तो एनवायरमेंट हो गया जिससे हम घिरे हुए हैं, वो एनवायरमेंट बना हुआ है कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स का, एलिमेंट्स का, ऑल दोज कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स, कल्चर, मेथड, सिस्टम, सबको मिला करके जो नॉलेज जो इन एनवायरमेंटल थिंग्स का देता है, that is the environmental science. So that we will see the definition. Then the next topic is scope of environmental studies. Scope का मतलब है गुंजाइश। हमने एनवायरनमेंट के जितने हम एलिमेंट्स देखेंगे, कंपोनेंट्स देखेंगे, उनका इफेक्ट एनवायरनमेंट पर पड़ता है और एनवायरनमेंट से एनवायरनमेंट पे रहने वालों पर पड़ता है। तो और वो साइंस जिसे मैन ने बनाया है, तो डेफिनेटली एनवायरमेंटल साइंस में जो भी हम जान रहे हैं, वो मैन के पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, एनवायरमेंटल एलिमेंट्स का, कंपोनेंट्स का, सब्जेक्ट्स का, वो है एनवायरमेंटल साइंस। तो जितना हम जान चुके हैं, उससे अभी बहुत ज्यादा जानना बाकी है। और ये भी हम सब जानते हैं कि जो हम जान चुके हैं, उनको हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन ना करके उनसे हैजार्ड्स ज्यादा क्रिएट कर रहे हैं। तो स्कोप्स एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा है, गुंजाइश की, सुधार की गुंजाइश अभी बहुत ज्यादा है। अब हम सुधार की तरफ बढ़े, ये बल्कि ज्यादा रिक्वायरमेंट है आज की। वो हम देखेंगे इसके बाद कि कहाँ कहाँ क्या क्या हैजार्ड्स कर दिए हैं हमने, जिनको सुधारना है। एनवायरनमेंट के बारे में हम जितना जानते जा रहे हैं, उतना ज्यादा जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उससे प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट कर रहे हैं। तो स्कोप्स और भी बढ़ता जा रहा है, पर जरूरत से बढ़ाने की नहीं है, उसको जान के इम्प्लीमेंट करने की है। तो वो कैसे करेंगे, इसके लिए जरूरी है एनवायरमेंटल स्टडीज को समझना। दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। जब तक हम ये समझेंगे नहीं कि हम जो कर रहे हैं, हम जो अंधाधुंध अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, अंधाधुंध पेड़ की कटाई हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, एनवायरमेंटल कंडीशंस में इतने ज्यादा गैसियस ऐसे गैसेस क्रिएट हो रहे हैं अर्बनाइजेशन की वजह से, डेवलपमेंट की वजह से, डिस्कवरीज की वजह से, इन्वेंशंस की वजह से, मॉडर्न इक्विपमेंट्स के इन्वेंशंस की वजह से, पूरा एटमॉस्फेयर, पूरा एनवायरनमेंट इस और उस तरह से पोल्यूटेड होता जा रहा है, डिसबैलेंस्ड होता जा रहा है। उसको सुधारने के लिए अब हमको ये जानना बहुत जरूरी है, बहुत सारे एक्ट्स क्या हैं, कैसे कल्चरल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, नॉलेज के लेवल पे प्रैक्टिकली कैसे सुधारा जाए,
वो जानने के लिए environmental studies हैं. So that will be the importance of environmental studies. So under these three headings, the main things, the summarized details of this video is here. Now in the upcoming videos, we will see the important points and we will go ahead. आपके अपने notes के लिए आंसर कर सकें उसके लिए enough literature मैंने इन slides में दिए हुए हैं. We will discuss only the important points and we will go ahead. Then you can prepare your notes using these slides of this PowerPoint presentation. So the first is definition. अभी हमने देखा environment है क्या. अब अगर environment को point आपको देना, आंसर करना है, तो दो कोट्स मैंने दिए हैं, एक बोरिंग का, एक डगलस एंड हार्लैंड का. दोनों ने एनवायरनमेंट को एक, जिसका लबोलुआब आप कहिए, जिस्ट कहिए, is the same. Environment consists of sum total of stimulation which he receives from his conception until his death. जो हम environment क्या है, that is जो एक living organism के आसपास है, जिसमें वो जब पैदा होता है और जब मरता है तब तक जो इम्पैक्ट उस पे आते हैं, वो है एनवायरनमेंट. डगलस एंड हार्लैंड ने बताया कि aggregate, same thing here, aggregate external forces, influences and conditions which affect life, nature, behavior and growth, development, maturity of living organism is the environment. So environment is this, and the environmental science is the science studies the interaction between man and the environment. एक दो शब्द हैं, man और environment के बीच का interaction. तीन शब्दों में आप environmental science को हम explain बता सकते हैं, explain तो नहीं, represent कर सकते हैं, emphasizing the links between different subjects related to this issue, including ecology, economics, geography, जियोलॉजी, मीटियोरोलॉजी, पॉलिटिक्स एंड सोशियोलॉजी, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में हम इसके पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं. द मल्टीडिसिप्लिनरी एनवायरनमेंट. नाउ दिस इज नाउ द एनवायरनमेंट. These are the points again. As we have seen, environment is derived from the French word environner or environ, that means encircle or surrounding. This is the only point in this slide that is to be noted. Otherwise, all these facts we have already discussed. In the next slide, before, this is the scope of environment and scope of environmental studies actually इनको पढ़ना है, but scope environment में क्या क्या है, पहले जब तक हम इसको जान नहीं लेंगे तो उनके बारे में और क्या जानना है, that is गुंजाइश. साइंस में उसके बारे में अभी हमें और क्या क्या जानना है, that we will see. The scope of environment में, और this must be here, the elements or the components of environment, जिसमें environment consisting of 4 segments on earth, namely atmosphere, hydrosphere, lithosphere and biosphere. That is, atmosphere हमारे आसपास का वातावरण, हमको जो घेर करके रहता है, that is the gaseous components. Mainly हमारे आसपास 100 किलोमीटर के दायरे में जो गैसेस हैं, जो कि बहुत नेचुरल एनवायरनमेंट में थे तो बहुत बैलेंस थे, अब वो डिसबैलेंस होते चले जा रहे हैं. तो एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर है जिसमें हम हैं, और उस एटमॉस्फेयर के बारे में, गैसियस इम्बैलेंस के बारे में स्कोप्स को बताएगा एनवायरमेंटल साइंस. सो दिस इज एनवायरनमेंट है क्या, किस तरह से एनवायरनमेंट marked effect on energy balance at surface of earth. It absorbs most of cosmic rays from outer space and major portion of electromagnetic radiation from the sun. सूरज से जो आता हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उससे एनवायरनमेंट हमको बचाता है. दैट इज दिस कवरिंग ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम अ नंबर ऑफ वेरी हार्मफुल अल्ट्रावायलेट, near infrared radiation, radio waves coming from the sun and other planets. Outside this environment जो space है, अंतरिक्ष है, उसमें भी बहुत सारे planets हैं, उनसे क्या effect अर्थ पर आ रहा है, उनको, जिसका एक बहुत important आपने सुना होगा, ओजोन डिप्लीशन की वजह से ये इस effect को कम किया, एटमॉस्फेयर लगातार रिस्क में आ रहा है. तो environmental studies के scope में हम वो देखेंगे. So this is atmosphere. Then is the hydrosphere.
इतना डिटेल्स हम नहीं देखते हैं, यू जस्ट यू कैन टेक फ्रॉम दीज नोट्स। हाइड्रोस्फीयर पानी, जो हमारे आसपास पानी है, इसमें दिस यू मस्ट हैव हर्ड, आप यू मस्ट बी नोइंग 97% तो समुद्र का पानी है, 2% water is locked in the polar ice caps and glaciers। 97 समुद्र है, जो ऑलरेडी हमारे खाने पीने डेली यूज के लिए तो नहीं है, उसको बैरियर की तरह ही यूज वो एक्ट कर रहा है। देन 2% लॉक पानी है, ओनली 1% वाटर इज अवेलेबल फॉर इन रिवर्स, लेक्स एंड स्ट्रीम्स, जो हमारे ह्यूमन यूज के लिए है। सो इस 1% पानी को भी अब हम इतनी तेजी से खत्म कर रहे हैं कि आज जो स्थिति है कि 2050 तक लिटरली ये बार बार कहा जा रहा है कि अर्थ पर से लाइफ खत्म होने जा रहा है, क्योंकि एनवायरनमेंट पूरी तरह बर्बाद हो रहा है। So this is the hydrosphere is the another component. Then is the lithosphere. That is it is the outer mantle of solid earth. This lithosphere is comprising of the minerals occurring in earth crust. जमीन के गर्भ में जो solids हैं उनके बारे में वो जो layer है, that is the lithosphere, that is another component or the element of the earth। And then the last is the biosphere। तो ये 4 components हैं। Biosphere, as the name says, each and every living thing जो surroundings में, these all together, these 4 components form the environment। And the environmental study or the scope of the environment study shows what are the chances, जिससे कि आज जो environment लगातार खराब होता जा रहा है, कई एक reasons हैं, उनको किस बहुत सारी गुंजाइश है कि उनको सुधारा जाए। So the scope of environmental studies is very wide, dealing with many areas like conservation of natural resources, ecological aspects, pollution of surrounding natural resources, pollution को control करें, controlling the pollution, social issues connected to it, and impacts of human population on the environment। So these are the main scopes of the environmental studies, which can be explained or summarized under these headings। The awareness among the people, awareness सबसे पहली चीज जो है, जब awareness जगाना, लोगों को बताना कि environment किस तरह था, जब भगवान ने बनाया था प्रकृति को तो कोई एफर्ट की जरूरत नहीं थी, तो जो एनवायरनमेंट था उस एनवायरनमेंट को आज हमने कहां कहां तक बिगाड़ दिया है, ये अवेयरनेस जगाना जरूरी है। दैट इज द पोटेंशियल पैटर्न्स ऑफ यूटिलाइजेशन एंड balance of various resources available for future use in state of a country are analyzed in this environmental science study। EVS provides knowledge about ecological system, एक environment, एक system of producer consumer at different levels, hierarchical system में different levels of producers consumers के जो बनाते हैं ecosystem, their cause and effect and their relationship the environmental studies gives। EVS provides necessary information about biodiversity richness and potential dangers to the species of plant, animal and microorganism in the environment। Biodiversity जो natural phenomenon में एक species general एक data available के basis पे ये अनुमान लगाया गया था कि बायोडाइवर्सिटी का ये एक्सटिंक्शन की स्पीसीज के प्रोसेस एक नेचुरल प्रोसेस है, जो साल 2 साल में एक आध स्पीसीज जाते थे। अब आज की दिन में ये हालत है कि इन एन एवरेज हर दिन एक स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रहा है। ये स्थिति को कैसे बचाएं? दैट इज बायोडाइवर्सिटी अवेयरनेस। Study enables one to understand causes and consequences due to natural and man-induced disasters। These are the main induced होगा। That is the disasters, the natural disasters हैं, flood, earthquake, landslide, cyclones, ये सब man-induced नहीं है, but अब man-induced भी होते जा रहे हैं। पहले natural थे, अब ये मैन इंड्यूस्ड होते जा रहे हैं, क्योंकि हमने एनवायरनमेंट को इतना बिगाड़ दिया है, इतना इम्बैलेंस हो गया है कि जो एनवायरनमेंट के नेचुरल कंपोनेंट्स हैं
उनकी आपसी सामंजस्य, उनका असंतुलन बहुत ज्यादा होता जा रहा है, एंड दैट इज क्रिएटिंग फ्लड, अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड, साइक्लोन्स, जो पहले कभी कभी सुनने में आते थे, अब हर सीजन में, जब बरसात है तो पहले दिन से बाढ़ आने लग जाता है, सूखा है तो गर्मी आते ही सूखे की स्थिति हो जा रही है। तो ये स्थितियां भयावह होती जा रही हैं। दैट the awareness should be there and the scopes are there so much कि इनको कैसे सुधारा जाए। The EVS enables one to evaluate alternative responses to environmental issues before deciding an alternate course of action। ये environmental studies के बारे, issues के बारे में हम अभी बहुत थोड़ा सा डिटेल्स में देख लेंगे कि ये इश्यूज जो आज के दिन में बहुत ज्यादा कंसर्न की चीज हो गए हैं, कंसर्न के सब्जेक्ट हो गए हैं। which are these issues? Just after completing these scopes, we will see in few lines about the environmental specific issues that has to be taken into consideration if we want to improve, if we want to save rather our environment. EVS enables environmentally literate citizens by knowing environmental acts, rights, rules, legislation. This is we have seen in my last video, environment law से environment का क्या impact है, किस तरह के legislative acts and environment के 6 acts and that we have seen already, to make appropriate judgments and decisions for the protection and environment of earth or environment. The studies exposes the problems of overpopulation, that is another, the pollution, explosion of pollution, population explosion is the biggest danger, biggest risk nowadays for the environment. सबसे ज्यादा जो आज के दिन का खतरा है, खास तौर से डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया में, तो करीब करीब जो ऑन एन एवरेज ये एक कहा जाता है, एक निष्कर्ष है कि पूरे वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है उसमें हर 10 क्या 7 से 8 में एक इंडियन है। तो इस बुरी तरह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है और ये पॉपुलेशन एक्सप्लोशन हर एस्पेक्ट, हर एलिमेंट, हर एरिया ऑफ एनवायरनमेंट को खत्म कर रहा है। तो इसका नॉलेज, इसके बारे में जानना और इसको सुधारना बहुत जरूरी है। सो दैट इज the problems of overpopulation, health, hygiene, role of art, science and technology in eliminating or minimizing the evils from the society. The study tries to identify and develop appropriate and indigenous eco-friendly skills and technology to various environmental issues. The eco-friendly, जो ऐसा नहीं है कि हर चीज बेकार ही है, बट अब हमने इतनी सारी डेवलपमेंट मेडिसिन में सीख ली है, पर उस मेडिसिन से जो मेडिकल वेस्ट निकल रहा है, तो मेडिसिन ने एनवायरनमेंट को सुधारा, डिजीज को कंट्रोल किया, तब तक सही था। अब उससे जो मेडिकल वेस्ट आने लग गए एनवायरनमेंट में, और वो नए नए हैजार्ड्स, नई तरह के कैंसर्स, नई तरह के एनवायरमेंटल डिप्लीशन गैसेस को डिप्लीट हो रहे हैं, और नई बहुत ही भयानकतम स्तर पर बीमारियां, क्या अजीब तरह के प्रभाव मैनकाइंड पर दिखने लग गए हैं। तो उनको जानना, उनको समझना, उनको सुधारना, these are the various fields of environmental science. It teaches the citizens the need for sustainable utilization of resources, as these resources are inherited from our ancestors to the younger generation without deteriorating their quality. Resources जो हैं, natural resources, unnatural resources, ये जो gifted थे, nature से gifted थे, उनका डिसबैलेंस को कंट्रोल करना, फ्यूचर जनरेशन को बचाना, environmental studies हमें सिखाएगा. It gives theoretical knowledge into practice and the multiple use of environmental factors. So these are now these the physical, biological, cultural elements. These are actually the components of environment we have just seen. So these are more or less the same things.
The elements and the components of environment are the same, and to know about these elements on the or these components is the environmental studies. So physical elements, we have seen the space, landform, water bodies, climate, soil, rocks, and minerals, determining the variable character of human habitat. Then biological elements, plants, animals, microorganisms main constitute the biosphere. And then are the cultural elements. Environmental studies के पहले environment के लिए cultural cultural elements like economical, social, and political elements are essentially man-made features which make the cultural background. ये कल्चरल एलिमेंट्स जो हैं जो ऑलरेडी धीरे धीरे मैन एक्वायर करता गया, उससे इन द वेरी बिगनिंग ऑफ द ह्यूमन कल्चर, जब दोज वेर वेरी मच फाउंड टू बी वेरी मच बेनिफिशियरी, जब एग्रीकल्चर शुरू हुआ एंड डिफरेंट कल्चरल एक्ट्स एंड रिचुअल्स शुरू हुए, पेड़ पौधों की पूजा, नदियों की पूजा, ये सारी चीजों को बहुत ही इन्वायरमेंटल फ्रेंडली थे। अब करते हम अब भी वो हैं, बट वो हजार्ड्स ज्यादा क्रिएट कर रहे हैं, सफाई, नेचुरल बैलेंस मेंटेन कम कर रहे हैं। तो उनको जानना, उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, and that is very important scope. So there are various scopes of environmental studies. Now the scopes we have seen, बहुत ही ज्यादा स्कोप है environmental studies में, और बहुत ज्यादा जानना भी जरूरी भी है अगर हमें environment को बचाना है. Now the environmental studies, the importance of the environmental studies. The environmental studies have become significant for these reasons. Agar now I have confined these into the under the word limits. स्कोप्स जब हम देखते जा रहे हैं तो साथ साथ हम समझते जा रहे हैं कि जो स्कोप्स हम देख रहे हैं उनको सचमुच जानना और उन पर एक्ट करना, उनको अपने बिहेवियर में लाना is the importance of environmental studies. The environmental issues are of being global environment issues like global warming. So before going into यहाँ पे जब आया तो let us see some of the environmental issues also. पहले हम environmental issues ही देख लें कि कुछ important issues में we are looking into our day-to-day life कि कितने तरह के environmental issues हैं. I have confined these issues under certain headings that include the industrial and vehicular pollution, that is the man-made, जो अब शुरुआत हुई थी हमारे convenience के लिए, comfort के लिए, और अब ये extreme चरम पर पहुंच रही है, इसको बचाना बहुत जरूरी है. Climate change, rising concentration of greenhouse gases, GHGs, of anthropogenic origin in atmosphere such as carbon dioxide, methane, nitrous oxide have increased very much since the 19th century, increasing temperature globally. इन सारी एक्टिविटीज की वजह से टेम्परेचर, पूरी दुनिया का टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है. The sea level risen at an average annual rate of 1 to 2 millimeter during this period. अभी तक में sea level rise करने का क्या मतलब है? जो ग्लेशियर्स हैं, जो लॉक्ड वाटर था आइस कैप्स के रूप में, आइस ग्लेशियर्स के रूप में, वो सारे सब जगहों से वो मेल्ट कर रहे हैं और सी लेवल बढ़ रहा है. That means the most hazardous time is coming. The entire earth will be submerged if the sea level will be going on increasing in the present rate. The sea level has risen at, this is the continued increase in concentration of GHG in the atmosphere is leading to climate change, resulting into large changes in ecosystems, leading to possible catastrophic disruptions of livelihood, economic activity. मतलब जिस यही है कि पूरा वातावरण, क्लाइमेट बदल रहा है, समर सीजन, रेनी सीजन, विंटर सीजन, सारी इनकी जो इनकी खासियत थी वो इनके एक्सट्रीम्स पे पहुंच गए हैं. जाड़ा आता है तो एक्सट्रीम, गर्मी आती है तो एक्सट्रीम, रेनी सीजन आता है तो एक्सट्रीम, और इन क्लाइमेटिक रीजंस के, कैटास्ट्रोफिक डिस्ट्रप्शंस के रीजंस हैं एनवायरमेंटल, हमारे मेजर्स, उनको सुधारना बहुत जरूरी है. देन द वाटर पोल्यूशन,
देन पॉइजन बाय पेस्टिसाइड्स। अब इसका लैंग्वेज आप इसको मैंने शॉर्ट नहीं किया है बिकॉज आई थिंक पेस्टिसाइड्स पे आपको शॉर्ट नोट्स भी आ सकते हैं। पेस्टिसाइड्स से कितने तरह के हैजार्ड्स क्रिएट हो रहे हैं एवरी ईयर, इट इज से एवरी डे रादर 68 फार्मर्स आर गेटिंग अफेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जब वो स्प्रे कर रहे हैं तो डेवलपिंग कंट्रीज में तो सीधे हाथ से ही करते हैं, तो वहां से उनकी बॉडी में जा रहा है। जो क्रॉप्स पे डाल रहे हैं वो क्रॉप से एग्रीकल्चर जब हो रहा है तो उस पेस्टिसाइड्स का बैड इफेक्ट पूरे पॉपुलेशन जो उसको कंज्यूमर्स हैं उन पे पड़ रहा है। तो इस तरह से यू कैन सी पेस्टिसाइड्स पे, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट नहीं किया है, पूरा स्लाइड दिया है दैट इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर नोट्स एंड यू मस्ट नो ऑल्सो Pesticide Action Network Asia and the Pacific, that is PANAD. This is the regulation created in 1998 after the Bhopal disaster, जो एक बहुत ही बर्निंग और बहुत ही डिवास्टेटिंग एग्जाम्पल है पेस्टिसाइडल बैड इफेक्ट्स का, जिसके बारे में आज भी सब समझे होंगे, सबको याद होगा। देन पेस्टिसाइड्स सिर्फ क्रॉप्स में हैं, खाने में नहीं है। अब तो सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी जो बहुत चलन चल रही है इंडिया में, पेप्सिको एंड कोका कोला are the soft drink market in India which are having very hazardous pesticides in them. Acidulated and carbonated pesticides are there in soft drinks. So we must know about these and we must avoid them. Then are the hazardous waste, biomedical waste. Hazardous waste में solid भी हो सकता है, liquid भी हो सकता है, gas भी हो सकता है, and these are being created by a number of you can say the factories. बहुत सारे factories हैं, बहुत सारे industries हैं, बहुत सारे dyes, fertilizers, alkaline industries, acidic industries जो ये सब बना रहे हैं, और इनकी वजह से साइड प्रोडक्ट्स जो बाई प्रोडक्ट्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं इन इंडस्ट्री से, they are hazarding the atmosphere like anything. So that must be known. So these are not, if your answer is only for the scope and importance, it's not must कि आप इतना आंसर कीजिए, but these waste and these points you must know also. आपको मालूम होना चाहिए कि जब आप जो हमारे आसपास जो हो रहा है उससे एनवायरनमेंट को नुकसान कहाँ कहाँ पहुंच रहा है। देन बायोमेडिकल वेस्ट, हॉस्पिटल से जितनी भी दवाइयाँ, जितने ड्रग्स, जितने ट्रीटमेंट्स निकल रहे हैं, उतने तरह के हजार्ड्स बढ़ रहे हैं। देन आर द ई वेस्ट, आज जो हम कंप्यूटर्स और सेल फोन तो खिलौनों की तरह खरीदने और फेंकने लगे हैं, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, ये सारी चीजें जो हैं, दे आर क्रिएटिंग immense hazards, resulting into flame retardants, polybrominated biphenyl PBB and polybrominated diphenyl ethers. ये प्रोड्यूस होते हैं जिनकी वजह से भयानक ई वेस्ट हैविंग कैंसरस इफेक्ट्स। ये सारे जो ई वेस्ट हैं, दे आर hazarding the atmosphere like anything, and they are causing the skin problems, tumors, etc., etc. Then the major issue is of all those issues is resulting into the loss of biodiversity. Biodiversity भयानकतम स्तर पर खत्म हो, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। जो एक नेचुरल फिनोमिनन था वो हजार्डस वे में आ रहा है। So these are the major environmental study the issues जिनके बारे में हमको जानना चाहिए। इसके पहले कि हम एनवायरमेंटल स्टडीज का इम्पोर्टेंस जाने, पहले हम ये जान तो लें कि वो इश्यूज हैं क्या जिनको हम एनवायरमेंटल स्टडीज में सुधारने की देखेंगे। सो दीज आर द एनवायरमेंटल इश्यूज। इनको सुधारने के लिए इनके बारे में जानना जरूरी है। इनके बारे में जानकर वो मेजर्स उठाने चाहिए। रिक्वायर इंटरनेशनल एफर्ट्स एंड कोऑपरेशन टू सॉल्व द एनवायरमेंटल hazardous issues. That then another importance of environmental studies is development and environment. सिर्फ जो बुरा हो गया उसको सुधारो और जो अच्छा है उसको डेवलप करो।
एनवायरमेंट में डेवलपमेंट्स किए जाएं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द लाइफ और द मैनकाइंड, एनवायरमेंट को सुधारें, डेवलप करें। दैट हैज बीन कॉज, ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है तो हजार्ड्स ज्यादा क्रिएट हो रहे हैं। आज अब जो डेवलपमेंट हो रहा है दैट इज लीडिंग टू अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, हाई टेक एग्रीकल्चर एंड हाउसिंग। ये सारी वजहें हैं डेवलपमेंट की जो एनवायरनमेंट को बर्बाद कर रही हैं। अब इनको सुधारना जरूरी है। It has become phased out in developing world. The intention, अब तो ये एरिया वाइज devastations किए जा रहे हैं। The north intentionally moves their dirty factories to south to clean their own environment. मतलब ये स्थिति आ गई है कि अब एक एरिया दूसरे एरिया का, नॉर्थ के लोग साउथ को जानबूझ करके वेस्ट उधर फेंक रहे हैं, उधर डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, बिना ये सोचे कि वहां भी मैनकाइंड है, यहाँ भी मैनकाइंड है। तो ये नॉलेज, ये अवेयरनेस बढ़ाता है एनवायरमेंटल साइंस, मैनकाइंड की वेलफेयर के लिए हम काम करें। द एक्सप्लोसिव इंक्रीज इन पोल्यूशन, एज वी हैव सीन, पोल्यूशन का एनी टाइम राइज पे है। हर तरह का, एयर पोल्यूशन हो, नॉइज पोल्यूशन हो, रेडिएटिव पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, हर तरह का पोल्यूशन एनी टाइम हाइट पे अभी पहुंच रहा है। दैट इज क्रिएटिंग every area of life. Land, it is polluting; agriculture, it is polluting; it is hazarding the soil health problems. That is ultimately soil का health अगर बिगड़ रहा है तो ultimate कौन सफर हो रहा है? The mankind. That deficiency of micronutrients and organic matter, soil salinity, and damage of soil structure. Ultimately, it is affecting the mankind. So the another very important environmental studies is the need for an alternative solutions. अब हम जान तो लिए कि क्या क्या हैजार्ड्स हो रहे हैं, कितनी परेशानियां हो रही हैं, उनको सुधारा कैसे जाए। Alternative, what are the alternative measures that is the for the sound and sustainable development to all citizens, that is to be done by the environmental studies. Environmental studies will say how these disasters can be reverted, can be at least tried to be reverted. Then that requires need for wise planning of development. इन सब के लिए प्लानिंग करनी होगी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, शॉर्ट टर्म प्लानिंग, इमीडिएट कैसे सुधार आए, फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में किस तरह की प्लानिंग की जाए। दैट इज depending on the sources availability, natural resources, unnatural resources. These resources, इनके बारे में the next topic is going to be the natural resources. इन resources को जानना, उनको utilize करना, उनकी processing करना, these are all things have to be synchronized with the ecological cycle. जो इकोसिस्टम है हैबिटेट का, एनवायरनमेंट में जो लिविंग थिंग्स हैं उनको लेकर के जो इकोसिस्टम है उनके सराउंडिंग में, उस साइकिल को में सिंक्रोनाइजेशन द एलिमेंट्स का विद द लिविंग थिंग्स बहुत जरूरी है, और उसकी प्लानिंग एनवायरमेंटल स्टडीज करता है। In any plan of development, our action should be planned ecologically for the sustenance of environment and development. The Mishra in 1991 recognized 4 basic principles of ecology: holism, ecosystem, succession, and conservation. These are the environmental factors, important environmental factors, जिनके बारे में जानना और उनको समझ करके बेटर एनवायरनमेंट के लिए प्रयास करना is the importance of environmental studies. So holism, considered as the real base of ecology, in hierarchical level at which interacting units of ecology are discussed, are like this: the impact of human activities on environment, value system. Value system is
the education, knowledge, कैसे different values society में, ethical, moral values through the journalism, media, education, पढ़ा करके, समझा करके, सिखा करके value system develop करना is the the need of the time. Plan and design for sustainable development and environmental education. Keeping in view of the goal of planning for environmentally sustainable development, India contributed to the United Nations Conference on Environment and Development, UNCED, referred as Earth Summit, held at Rio de Janeiro, the capital of Brazil, on 3rd to 14 June 1992. So every country is taking part. We are actively participating into the all the efforts taken by the world to improve the environment. Now, these are certain more importance while population is increasing. Population को control करना, natural resources को संभाल करके रखना, methods and techniques of exploiting natural resources को जो बढ़ते चले जा रहे हैं उनको control करना, over exploitation of resources को control करना. These are the different fields. Unplanned exploitation को control करना. These are the areas जिनको जान करके environmental studies में के द्वारा में रिवील करके उस पर स्टडी करके ये डिसीजंस लिए जाएं, ये बताया जाए, ये कोशिश की जाए. The people should take a combined responsibility for deteriorating environment and begin to take appropriate actions to space the earth. This is the most importance of environmental studies. The most important plan or the aim of the environmental studies. Education and training are needed to save the biodiversity and species extinction. The urban area coupled with industries is major sources of pollution. So in pollution को control करना बहुत जरूरी है. Now, so these are the various aspects of environmental studies that किस तरह से environmental studies multidisciplinary approach के साथ human के interaction with natural environment को balance करे, that is the environmental studies. It integrates different approaches of the humanities, social sciences, biological sciences. So all these we have seen कि किस तरह से environmental studies. Now it is the key instrument for bringing about changes in knowledge, values, behavior, and lifestyle. So all these are the terms that we have already seen. किस branch से कैसे कैसे environmental studies environment को improve करने में help कर सकते हैं. These branches, about these branches we have seen in the last video. So with this, these are the environmental issues that we have already seen. So with this, we have seen environment क्या है, environmental studies क्या है, environmental studies का में अभी कितने scopes हैं जिनको लेकर के बढ़ना है environment को बचाने के लिए, और वो knowledge जो science हमें दे रहा है उसका importance क्या है. So we have seen all these points. So thank you so much. Do like, share and subscribe the channel if you like it, and press the bell icon to get notification about the upcoming video. Thank you.